Hey there, welcome back to the YouTube channel. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे definition of algorithms, properties of algorithms and the steps required to construct a algorithm. So let's start. So what is the meaning of algorithm? अगर algorithm को हमें simple way में define करना है, algorithm is a combination of sequence of finite steps to solve a particular problem. So this is the standard definition of algorithm. So algorithm की definition को समझने के लिए एक example हम consider करते हैं. Let's suppose we have a problem of how to make tea. So to solve this problem or to prepare tea, we have to design the algorithm. So to prepare tea, the steps are: first step is boil water. दूसरा जो step है add sugar and tea leaves. then तीसरा जो step है add milk and filter it. So ये तीन step हैं which we have to follow to prepare tea. So this is a tea making algorithm. So ये जो तीन स्टेप हैं, this combination of three steps is an algorithm for making tea. So similarly हम एक दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं which is addition of two numbers. So addition of two numbers कि ये जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो वी हैव टू राइट द स्टेप्स इन लेमैन लैंग्वेज. हमें सिंपल लैंग्वेज में स्टेप्स लिखने हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है. सो टू नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अंदर हमें स्टेप्स लिखने हैं विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो हाउ डू वी ऐड टू नंबर्स? सो फर्स्ट वी शुड हैव टू नंबर्स. लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर इज 2, सेकंड नंबर इज 5, देन वी add them using operation and then we print the output which is 7. So this is an input, this is second input, this is output. So what are the steps involved to solve this particular problem? So addition of two numbers algorithm is: first step, we have to take two numbers as input. Let's suppose we are storing those numbers in two variables a and b. Then second step is add a and b and store the result in some temporary variable c. Then third step will be to print the sum which is stored in c variable. So these are the steps which are involved to add two numbers. So ये तीनों स्टेप यहाँ पे लेमैन एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं. So the combination of these three steps is a algorithm for the addition of two numbers. Let's go back to the definition of algorithm. So यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को हाईलाइट किया था. फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन. जैसा कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि टी प्रिपरेशन के लिए 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. एंड एडिशन ऑफ 3 नंबर्स के लिए द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड. सो द कॉम्बिनेशन इज important. Then the next keyword is sequence. We must follow a particular sequence to solve a problem. So यहाँ पे क्या है कि हम थर्ड स्टेप को सेकंड स्टेप से पहले नहीं कर सकते. सिमिलरली हम C को ऐड करने से पहले प्रिंट नहीं कर सकते. सो सीक्वेंस इज मैंडेटरी. हमें एक पार्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना होगा. देन आफ्टर सीक्वेंस वी हैव द कीवर्ड फाइनाइट स्टेप्स. इसका मतलब ये है कि हमारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद सोल्व हो जानी चाहिए. और जो भी ये फाइनाइट स्टेप्स हैं या फिर जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं, the execution time of these instructions should also be finite. Execution time भी finite होना चाहिए. Let's have a look on this diagram. Here we are supplying some input. In case of addition of two numbers, we are giving
two numbers A and B. Then this is our algorithm statements or instructions. So based upon the given input, after following the steps of the algorithm, we are going to get some output. So output is also mandatory for a algorithm. अगर किसी एल्गोरिथम के अंदर कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा है तो वो एल्गोरिथम यूजलेस है. So the problem statement of preparing a tea is getting solved in 3 finite steps. Similarly, the problem of addition of two numbers is also getting solved after following the 3 finite steps. So this is the definition of algorithm. Now let's go to next section to understand the properties of algorithms. So these are the properties of algorithms. Let's have a look on them one by one. So पहली property है it should terminate after finite time. So जैसा कि हमने algorithms की definition में देखा था कि हर एक step का जो execution time है वो finite होना चाहिए. कोई भी step infinite loop के अंदर नहीं होना चाहिए. वो कुछ finite time के बाद let's suppose 10 seconds और 10 milliseconds हमारे पास कुछ रिजल्ट आना चाहिए हर एक स्टेप का. सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेकंड प्रॉपर्टी इज इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. अगर कोई एल्गोरिथम आउटपुट ही नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एल्गोरिथम हमारे लिए यूजलेस है. सो दिस शुड आल्सो बी चेक्ड व्हाइल डिजाइनिंग ए एल्गोरिथम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एवरी स्टेटमेंट इन द एल्गोरिथम शुड बी अनएम्बिगुअस. इट मींस द एल्गोरिथम जो हम डिजाइन कर रहे हैं that algorithm should be deterministic in nature. That means it should produce same output every time the algorithm is executed. So the fourth property is algorithm should be independent of programming language. So जो हमारा एग्जाम्पल था एडिशन ऑफ टू नंबर्स, उसको हम सी लैंग्वेज के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम जावा के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम पाइथन के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. So while designing the algorithm, programming languages are not important. We have to write the algorithm in some layman language. So algorithm should be independent of programming language. So the fifth property is every step in the algorithm should perform some operation. तो हमारा जो एडिशन का एग्जाम्पल था उसके अंदर हर एक स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो रहा है. इन फर्स्ट स्टेप वी आर टेकिंग टू नंबर्स एंड स्टोरिंग देम इन द वेरिएबल्स. यहाँ पे हम नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड स्टोर कर रहे हैं. यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है, देन दोबारा से स्टोर ऑपरेशन है, देन थर्ड स्टेप में प्रिंट ऑपरेशन है. So this property is also important. Every step in algorithm should perform some operation. So these are the properties of algorithm which we have to take care while designing an algorithm. Third property is very very important. अगर हमने कोई indeterministic algorithm डिजाइन कर दिया है, so indeterministic algorithm हर एक एग्जीक्यूशन पे random numbers जनरेट करेगा. So हमारा जो algorithm है वो unambiguous होना चाहिए. So now let's go to next section where we will check the steps which are required to construct a algorithm. If we are saying what is the meaning of writing a algorithm? So writing a algorithm simply means selecting the best algorithm from the existing one. सो यहाँ पे हम सर्चिंग का एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे पास लीनियर सर्च भी अवेलेबल है, बाइनरी सर्च भी अवेलेबल है, सॉर्टिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल है. सो इफ वी आर राइटिंग एल्गोरिथम, उसका ये मीनिंग है कि हमें अवेलेबल एल्गोरिथम्स में से बेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर नीड. So now let's have a look on the steps which are required to construct the algorithm. So algorithm डिजाइन करने के लिए हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम दी जाएगी. So हमें प्रॉब्लम डेफिनेशन को क्लियरली समझना है. We have to report output corresponding to every input. While understanding the definition of algorithm, we have to understand the algorithm by checking what are the outputs for every input. So once we know the problem statement very clearly, then we will go to next step, which is design the algorithm.
So what is the meaning of designing the algorithm? So designing the algorithm means to our problem, which algorithm from the existing ones suits best. So we have to decide this part. So once we have decided the algorithm, the best algorithm, the next step is to draw the flow chart. So design algorithm का meaning है ability to decide and identify द बेस्ट एल्गोरिथम. सो हमें इस स्टेप पे चेक करना है कि हमारी प्रॉब्लम के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग सुटेबल है या फिर डिवाइड एंड कॉन्कर यूज करना है या फिर ग्रीडी टेक्निक बेस्ट सॉल्यूशन है या फिर ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक बेस्ट है या फिर बैक ट्रैकिंग बेस्ट है. सो एक बार अगर डिजाइन एल्गोरिथम स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स वी हैव डिसाइडेड द एल्गोरिथम टेक्निक विच वी हैव टू यूज टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम. Step 2 is over. That means we have the algorithm in our hands. Now we have to draw the flow chart. हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट डिजाइन करना है. To understand for the given input what will be the output. So एक बार हमने फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया, then next step है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन. सो टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन में क्या होगा कि हमें अपने फ्लो चार्ट की सहायता से जो हमने रिपोर्ट जनरेट की थी फर्स्ट स्टेप में, द आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट, उस रिपोर्ट को हमें यहाँ पे टेस्ट करना है और वेरीफाई करना है. सो हम इस स्टेप पे वेरीफाई करेंगे कि आर वी गेटिंग करेक्ट आउटपुट, जो कि हमने रिपोर्ट में कलेक्ट किया था. साथ ही साथ हमें ये भी चेक करना है कि फॉर एवरी इनपुट आउटपुट शुड बी देयर. सो अगर किसी भी इनपुट के रिगार्डिंग हमें आउटपुट में प्रॉब्लम आती है तो हम वापस से स्टेप 2 पे जाएंगे. अगेन वी विल चेक आवर एल्गोरिथम, देन अगेन वी विल ड्रॉ द फ्लो चार्ट, then again we will test and verify our inputs by generating the output. So once we have finished the testing and the verification, then we have to go to the next step, which is coding, or to implement our algorithm with the help of some programming language, either C or Java or Python. So इस step पे we will write our program in some programming language, either C or Java or Python or any other programming language. So whatever the program is, where we are storing the programs. So we are storing the programs normally in hard disk drives. So in our hard disk drives, our program is stored. So जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, जब भी इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क ड्राइव से उठा के मेन मेमोरी में रखा जाएगा. द प्रोग्राम विल बी मूव्ड टू मेन मेमोरी फ्रॉम हार्ड डिस्क ड्राइव. सो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेमोरी के अंदर होगा. सो व्हेन एवर वी आर रनिंग आवर प्रोग्राम, सो रनिंग एक्चुअली टेक 2 रिसोर्सेज. Program execution actually consumes main memory space. Also, it will use CPU time to execute our program. So जो भी मेन मेमोरी स्पेस यूज हो रहा है हम उसे एनालाइज करेंगे 6th स्टेप के अंदर एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रोग्राम. सिमिलरली जो भी CPU टाइम कंज्यूम हो रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो हम 6th स्टेप के अंदर एनालाइज करेंगे एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. So once we have implemented our program with the help of some programming language, then next step is analyzing the algorithms, which actually means finding the space complexity and finding the time complexity of our program. So why we have to compare the space and time of our programs? So analyzing actually means, analyzing is a process of comparing 2 algorithms.
two algorithms with respect to time and with respect to space. So different algorithms को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, वो कॉन्स्टेंट है टाइम और दूसरा है स्पेस. So these are the 6 steps which we have to follow to construct a algorithm. इसलिए हम ये बुक पढ़ रहे हैं, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम एनालिसिस एंड डिजाइन, या फिर हम इसको कह सकते हैं एल्गोरिथम डिजाइन एंड एनालिसिस. सो वट एवर वी वुड लाइक टू कॉल. सो एनालिसिस जो पार्ट है वो एल्गोरिथम सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हम एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कैसे हम एल्गोरिथम्स की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं. सो एनालिसिस को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.